ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। आज आप दिव्य श्री लक्ष्मी तंत्रोक्त कवच श्रवण करने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का यह कवच माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस कवच के पाठ करने से या श्रवण करने से घोर दारिद्रता दूर हो जाती है, धनागमन के मार्ग खुलते हैं, कर्ज से मुक्ति के मार्ग बनते हैं, कलह कलेश शांत होती है, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं, समस्त प्रकार की रोग व्याधि शांत होती है और शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का यह दिव्य तंत्रोक्त कवच हमें पूर्ण श्रद्धा और भाव से श्रवण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि इस कवच का हम अनुष्ठानिक रूप से पाठ भी कर पाएं। चलिए श्रवण करते हैं। यह कवच हमने पूर्ण 7 पाठ आपको श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराए हैं। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और श्रवण करते रहिए, अपने कष्टों का हरण करिए। ओम तंत्रोक्त श्री लक्ष्मी कवचम लक्ष्मी में चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे शर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभ्यं तस्य नाशिता किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्ता लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते शातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति तंत्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम्। ओम लक्ष्मी
लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ तन्त्रोक्त श्रीलक्ष्मी कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे शर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभ्यं तस्य नाशिता किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्ता स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते शातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयन्नियतं गेहाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति तन्त्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम्। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ तन्त्रोक्त श्रीलक्ष्मी कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे शर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु
विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभ्यं तस्य नाशिता किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते शातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयन्नियतं गेहाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति तन्त्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम् ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ तन्त्रोक्त श्रीलक्ष्मी कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु
कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोज्यपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभ्यं तस्य नाशिता किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते शातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयन्नियतं गेहाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति तन्त्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम् ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ तन्त्रोक्त श्रीलक्ष्मी कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोज्यपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभ्यं तस्य नाशिता
किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तः स लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते शातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयन्नियतं गेहाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति तन्त्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम्। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ तन्त्रोक्त श्रीलक्ष्मी कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत्। मृत्युव्याधिभ्यं तस्य नाशिता किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते शातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते।
विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमाशं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठना उन्माश मध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयन्नियतं गेहाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशे ध्रुवम् इति तन्त्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम्। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ तन्त्रोक्त श्रीलक्ष्मी कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभ्यं तस्य नाशिता किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्ता स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते शातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमाशं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठना उन्माश मध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयन्नियतं गेहाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा
सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशे ध्रुवम् इति तन्त्रोक्तं लक्ष्मी कवचं सम्पूर्णम्। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः।